Okay, now everybody had calculated the shear force. Everybody had got the answer, that is 56.28 kilonewton. After completing the shear force calculations, let me know so that we can proceed further. Okay. I hope all the others had also done. Now, after calculating the shear force, you need to calculate moment. So, moment calculate करने के लिए again you are having the formula, that is Vt into C upon 2n. So, Vt just now you had calculated, that is 35.18. C is nothing but the spacing that you had calculated in the previous step, that is 800, and 2 into n, and the value of n you are going to substitute as 2. तो इसमें से आपको मोमेंट मिलता है, that is 7.036 किलो न्यूटन मीटर. Then you need to do for the calculations for the bolted connection, as they are mentioned in the question that you need to design the connections. So आपको bolted connection के लिए design करना है. For that the diameter of the bolt is being given to you, that is 20 millimeter. So diameter of the hole कैसे आएगा? That is diameter of the bolt plus 2. You will get the diameter of the hole, that is 0. That will be 22 mm. Then you need to calculate the pitch distance, that is 2.5 into diameter of the bolt. So आपको pitch distance मिलेगा 50 mm. So do up till here. And if any doubts, you can ask. बोल्ट का डायमीटर दिया नहीं है. हाँ महेश, हाँ, बोल्ट कनेक्शन का डायमीटर दिया नहीं है. बोल्टेड कनेक्शंस का डायमीटर दिया हुआ है. वेट, लेट मी चेक. हाँ मैम, दिया है. M20 दिया है. Yes, M20 is being given to you. Slightly increase your speed. We need to complete this sum by today itself. Okay. I hope all the others had also completed. Yes, ma'am. Now, for calculating edge distance or end distance, again you are having formula, that is 1.5 into diameter of the hole. So diameter of the hole is 22. So 1.5 into 22, you will get the edge distance or end distance, that is 33 mm. That will be approximately equals to 40 mm. So E provided आपको मिलता है 40 mm. Now you need to calculate the bearing strength and the shearing strength of the bolt. So for calculating the bearing strength, that is VDSB, that is FU by root 3. So FU 400 by root 3, NN into ANB plus NS into ASB. So NN, that is 1 into 0.78 into pi by 4 d square. So d is your 20 over here, that is diameter of the bolt. So just substitute the value of the diameter of the bolt upon partial safety factor. तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपका कितना है 1.25, दैट इज गामा एमवी. तो वीडीएसबी आपको मिलता है 45.27 किलो न्यूटन. देन वीडीपीबी कैलकुलेट करने के लिए 2.5 इंटू के इंटू बी इंटू टी इंटू एफ यू. क्या है 2.5 इंटू के इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू. So diameter कितना है 20, thickness you had got, that is D, and FUB आपको मिला 410 upon partial safety factor, that is 1.25. तो VDPP आपको मिलता है 98.4 किलो न्यूटन. So calculate bearing strength and shearing strength of the bolt. मैम VDP का VDPP का मतलब कि डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला क्या है? 2.5 into K into D into T into FU.
Yes, ma'am. तो k की वैल्यू हमें हमारे पास k के लिए 4 फॉर्मूले है. सो फ्रॉम दैट 4 formulas you have to consider the minimum value of the k. So minimum here we are not going to calculate all the values in detail. Minimum one we are going to consider. So one value आपकी k के लिए value 1 consider करके you need to solve. Okay. ये 400 यहाँ से ये ग्रेड से आया है ना क्या? हाँ ग्रेड से आया है. यस. मैम ये हाँ हाँ ग्रेड से आया है. और मैम ये 410 410 ग्रेड से आया है. 400 FUB you are not in the design of connections ना. I had uploaded all the videos. I will give you link by tomorrow. So आप जब design of connections देखोगे तो ideas will be more clear. FUB and FU. समझा So नहीं FUB will be ग्रेड से 400 and 416 FU हाँ will be 410. Yes what? मैम दोनों की वैल्यू अलग आ रही है ग्रेड तो सेम दिया है काय की वैल्यू अलग आ रही है? VDPB की. नहीं 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 400 और 410 डिफरेंस है 400 and 410 एक आपका FUB है और दूसरा FU है. यस मैम एफयू के लिए हमें टेबल चेक करना पड़ेगा ना Yes. Yes, can anybody let me know what is meant by FU and what is meant by FUB? Yes, anyone from you? FU क्या है और FUB क्या है? I had explained एफयू you in the very first एफयू lecture. प्लेट का FUB के लिए हमें क्या करना है? ग्रेड ऑफ बोल्ट अगर 4.6 दिया हुआ है, wherever the grade 4.6 is given, so FUB will be 400 Newton per mm square, and when the steel of grade that is FE 410 अगर स्टील का ग्रेड दिया हुआ है तो FU की वैल्यू रहेगी 410 और ग्रेड ऑफ बोल्ट अगर 4.6 है तो FUB रहेगा आपका 400. अंडरस्टूड? अभी ऊपर क्या है? VDSB में है FUB और VDPB में क्या है? FU. That is the grade of the steel, that is 410. Now understood, Mahesh? यस मैम Okay. Yes, done up till here. Everyone had completed up till here. डन मैम Yes, ma'am. Okay. Now you need to calculate the number of bolts in one line. एक line में कितने bolts है that you need to calculate. So again उसके लिए आपके पास में formula है that is 6 into m under root of 6 into m upon n into p into bv. bv is nothing but the minimum value from the bearing strength of the bolt and the shearing strength of the bolt. So minimum value दोनों में से minimum value कौन सी है? एक आई है आपकी 45.27 और दूसरी आई है 98.4. सो दोनों में से स्मॉलर वैल्यू हैव टू कंसीडर. सो स्मॉलर वैल्यू इज 45.27. m इज नथिंग बट द मूवमेंट जो आपने पहले कैलकुलेट किया है. सो मूवमेंट की वैल्यू आपको कितनी मिली है? 7.036. देन n that is 2. p is nothing but the pitch distance. So number of volts in one line कितने आते हैं? 3.05. That is approximately equals to 4 volts.
So calculate the number of volts, and here in this diagram, so here, sorry. So यहाँ पे एक in this particular diagram, 4 bolts are there in one line, and this 40 is nothing but the end distance or edge distance, और ये क्या है आपका pitch distance, that is 50. So just calculate the number of bolts, and after calculating let me know. मैम यहाँ पर n नंबर ऑफ शेयर प्लेन है ना? Yes. The formula, there is just formula in the number of volts, and in that particular formula you have to substitute the values. So see the formula, that is 6 into m upon n into p into bv. N is the number of shear planes, and p is your pitch distance, and bv is the minimum value from both the values, that is the number of volts, and that is the bearing strength and the shearing strength of the bolt. Okay. Yes, done. Yes, ma'am. Okay. Wait. Okay. Now you need to calculate FA and FB. FA is nothing but the VB upon number of volts. So VB आपको कितना मिला था?
that is 56.28 upon number of moles that is 4. So उसमें से Fa की वैल्यू मिलती है 14.07 किलो न्यूटन and Fb is mr upon summation r square. Summation r square के लिए you need to calculate first of all r1 and r2. So now what is r1 over here and what is r2? Yes, anyone from you, can you let me know what is r1 and what is r2 from the diagram? Yes. डायग्राम में से R1 और R2 क्या है? R1 is nothing but the radial distance of your these poles. ये दोनों poles का radial distance because ये जो बीच के दो poles है इसका radial distance and ये जो आखिरी के जो दो poles है उसका radial distance. So that will be your under root of 75 square, that will be R1, and under root of 25 square, that will be R2. So just substitute the values of R1 and R2, that will be 2 into R1 square because total number of poles कितने हैं आपके पास 4 है. So 2 into R1 square plus 2 into R2 square, that will be the value for summation R square. So पहले FA Can कैलकुलेट you करो repeat फिर it again? FB कैलकुलेट करो. हमने यहाँ पर 75 क्यों लिया मैम? एफ में न्यूमरेटर में कहाँ पे 75 FB मैम, में न्यूमरेटर में. हाँ या हाँ मैम, वही वही हाँ हाँ आपका कसर जहाँ पर था वहीं पर. यस यस wait 25 ही ले. there should not be 75 there will be only movement of resistance. वहाँ पे 75 नहीं चाहिए. So just delete that 75. अगर 75 नहीं कंसिडर किया तो क्या आंसर आ रहा है? Yes, what is the answer you are going to get if you are not going to consider the 75? 562.88. Wait. वैसे FB के लिए you are having the formula PER by summation R square, but here the eccentricity is not given to you. इसीलिए हम जो हमारी R1 की वैल्यू जो है means that is only 75 that we are going to consider over here. Only R1 because हमारे पास यहाँ पे eccentricity value is not given, otherwise FB का formula है और to calculate the force FB
The formula is PER by summation R square. PER by summation R square. So here P to E. P to E is nothing but the movement. So movement into R1. So you have to consider 75. So consider the value 75. Don't delete that value. So by considering 75, आपको FB की value मिलना चाहिए 42.216 किलो न्यूटन. देखो 42.216 मिलती है या नहीं. Yes, ma'am. Getting. Okay. Now cos theta. Again theta is your 90 degree. So theta is 90 degree. So just substitute the values for FR. So FR के लिए आपके पास में formula है, that is FA square plus FB square plus 2 into FA into FB into cos theta. So just substitute all the values in the given formula. You will get FR, that is 44. That is the resultant force. So resultant force आपको मिलता है 44.49 किलो न्यूटन. थीटा की वैल्यू cos थीटा Theta की 0 कैसे value मिला? cos theta. We are going to consider the theta as 90 degree over here. Cos theta again you will get from the diagram जो हमने R1 और R2 कैलकुलेट किया है ना, उसमें से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी. आई विल शो यू इन द डायग्राम इटसेल्फ कि थीटा की वैल्यू 0 कैसे आई है. सो उसमें से आपको थीटा मिलेगा 90 डिग्री. Yes, complete it fast. Yes, completed. Everyone had got the values for FR, that is the resultant force. Resultant force के लिए सबको values मिल गई. Okay. So now we'll proceed further. Ma'am, wait. Okay, do fast. Done, ma'am. Okay. Then FR की value is less than BV. BV is nothing but the bearing strength and shearing strength में से दोनों में से smaller value जो आती है उससे आपका जो resultant force है उसकी value कम है. It means that your design is safe for the spacing 160 mm. So case B आपने solve किया. अभी you need to calculate case A. तो case A के लिए spacing आपको 100 mm consider करके again you need to do the same calculations. तो सबसे पहले VP कैलकुलेट करो. VP के लिए फॉर्मूला है VT इंटू सी अपॉन 2 इंटू NS. सो स्पेसिंग 100 कंसिडर की. सो 100 प्लस 2 इंटू गेज डिस्टेंस दैट इज 45. तो उसमें से आपको VP की वैल्यू मिलेगी. Then after calculating the VP, you need to calculate the moment. So again for calculating moment, you are having the formula that is VT into C upon 2n. उसमें से number of bolts again 4. Then FA, the same formula you are going to use for the FA. FA के लिए क्या formula था? Yes, anyone from you?
What is the formula to calculate FA? That is VB upon number of bolts. So यहाँ पे VB की वैल्यू आपकी आती है 74.06 अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट्स दैट इज 4. तो FA आपको मिलता है 18.515 किलो न्यूटन. So first of all do up till here. Then we'll proceed further. Yes, over up till here. Everyone had completed up till here. Yes, done. Yes, ma'am. Okay. Then उसके बाद में जो R1 और R4 है that will be same. That is ऊपर का सबसे ऊपर का बोल्ट और नीचे के बोल्ट के लिए रेडियल डिस्टेंस सेम रहेगा और जो दो बीच के बोल्ट रहेंगे तो उसके लिए रेडियल डिस्टेंस सेम रहेगा. So R2 and R3 will be same. So R2 और R3 आपका रहेगा 25 और R1 और R4 रहेगा 75. So उसमें से FB भी सेम रहेगा that is 42.216 and theta will also be same over here. So just note down same FB, same theta. Yes, done. We are having less time. Should I proceed further? You are completed up till here. FB और theta मिला सबको? Okay, had you got up till here? Yes, ma'am. Okay. Then उसके बाद में again you need to calculate FR. So again say FA square plus FB square. So FR आपको मिलता है 46.09. So it is greater than BB. So here for the first case your design is not safe. अभी N की वैल्यू आप 2 कब लोगे? For I section और C section N will be 2 and N will be 4 for the angle section. So for case A, your design is not safe. That is for the spacing 100 mm कंस्ट्रक्ट की तो आपका डिजाइन सेफ नहीं है. अभी यहाँ पे हमें कनेक्शंस के लिए डिजाइन नहीं करना है because they are not mentioned in the question that for the all the spacing you have to do the design of connection. They are mentioned that only for the case B you need to design the connection. इसलिए हमने case B के लिए design of connection किया है. Okay, you are done up till here. Should I proceed with the next case, that is case C? Yes, ma'am. Okay. I hope all the others had also completed up till here. So case C क्या है आपका? Case C के लिए spacing दिया है 220 mm. So again you need to calculate VB. Again you need to calculate movement. Again you need to calculate number of bolts. Same steps you need to repeat. FA calculate करना है, FB calculate करना है. So here आपका FR जो आता है that is less than BB. So your design is safe for the case 220 mm. So again you need to repeat the same steps. So तीनों भी केसेस के स्पेसिंग अलग अलग थी. Only we need to check जो that is जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है वो हमारा जो बियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ में से दो वैल्यूज बीवी जो मिला है हमें that is 45.27 उससे कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है. Just we need to check for different spacing.
So now that also told you to mention a comment. So after completing, let me know so that we can proceed further. And if any doubts in this, you can ask. After completing, let me know. थर्ड वाले केस में हमने थीटा को 90 डिग्री क्यों कंसीडर किया? I will show you while drawing the diagram for R1 and R2. R1 और R2 के लिए जब डायग्राम में बताऊंगी तभी वो थीटा का भी बता दूंगी. Okay, completed up till here. Now we need to mention a comment. Yes, done. Should I proceed further? Yes, all of you are done up till here. Okay. So अभी इसके बाद में आपको कमेंट्स में लिखना है as spacing decreases to 100 mm, capacity of the column also decreases as built up section fails. अगर स्पेसिंग कम हो रही है तो आपका जो कैपेसिटी ऑफ द कॉलम है वो भी कम हो रहा है और बिल्ट अप सेक्शन फेल हो रहा है. क्यों फेल हो रहा है? बिकॉज जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है देन द बोल्ट देन द बीवी. सो आपका जो बोल्ट है वो फेल हो रहा है. बट दूसरे केस में जैसे ही आपकी स्पेसिंग बढ़ रही है, that is when as the spacing increases to 220 mm your capacity of the column also increases. तो अगर स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है तो कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है और जो बिल्टअप सेक्शन है वो फेल नहीं हो रहा है, वो उसको ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है. As the value of FR is less than BV, so your bolts are less stressed and the column is being more strengthened. So strength उसकी increase हो रही है as the spacing increasing. But similarly on the other side, जैसे ही आपकी स्पेसिंग डिक्रीज हो रही है वैसे ही आपका जो कॉलम है वो फेल हो रहा है. So note down these comments for both the different spacings. So I hope everyone understood the design of patterns, and if any doubts you can ask. Well, how you calculate the value of PV as 45.27? BV Yes. BV के लिए तो हमने वो कैलकुलेट किया है ना, और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट और शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, और उसमें से दोनों में से जो छोटी वैल्यू आई है दैट वी हैड कंसीडर द वैल्यू फॉर द BV, दैट इज 45 पॉइंट समथिंग. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. So we are having less than a minute. So those who are not given the attendance, give your attendance in the chat box. And from next lecture onwards, we are going to do the design for the column base and gusseted base.
Okay, all of you are completed.